Hello everyone. Today we would be continuing our Prelims Refresher 2025 MCQ and PYQ discussion. So today's topic is Indian economy and we would be discussing the Indian economy PYQs based on monetary policy. What we have done is that we have segregated PYQs on the basis of subject areas. So today's discussion would be based on monetary policy and RBI questions which we have turned up in the last few years. And the follow-up segments too would be based on it, and till the time we cover all of it, and then we would go to the next topic. Okay, so let's start the discussion. Okay, the first question for today: if the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? Okay, so the focus should be which are the things RBI is not going to do if it is adopting an expansionary monetary policy. For that, first you have to know what is an expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy क्या है? One is the expansionary and the other is the contractionary. Expansionary monetary policy means when the RBI is pumping more money into the market. Fine? So, money supply increases, and contractionary is when RBI is trying to suck out the liquidity out of the system, so it will be reducing the money supply. Okay, so the question is if it is adopting an expansionary monetary policy, अगर adopt कर रहा है तो RBI इसमें से कौन सी चीजें नहीं करेगा. पहले हम देखते हैं कि what would RBI do. If we get the answer to what RBI will do, then we also get the answer of what it would not do. Look at the first option. Cut and optimize the SLR, Statutory Liquidity Ratio. Now, for this first you have to know what is a Statutory Liquidity Ratio. SLR क्या होता है? SLR वो ratio है which banks have to keep in their own premises a percentage of this. Okay, since it is liquid, it involves cash plus gold plus government bonds. ठीक है? तो इसका कितना percentage every bank has to maintain in their own premises, fine, according to the RBI guidelines. तो SLR का रेशियो है, तो since bank have to keep it with themselves, तो ये वाला जो money है, this is not available for banks for lending purpose. ठीक है? तो अगर optimize होगा SLR, आप खुद सोचो, अगर ये reduce हो रहा है, ठीक है? अगर ये reduce हो रहा है, तो banks को कम परसेंटेज रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा ये SLR वाले फंड्स. ठीक है, तो अगर इट हैज टू रिड्यूस, अगर वो फंड्स वो रिड्यूस हो जाएंगे, दैट मींस बैंक्स के पास ज्यादा पैसा बचेगा लेंडिंग के लिए. ठीक है, दैट मींस जो हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, वो वाली इश्यू सॉल्व हो जाएगी. तो डेफिनेटली कट एंड ऑप्टिमाइज SLR इज अ थिंग विच they would be doing for a expansionary monetary policy. तो ये तो definitely नहीं होगा because question is what it would not do. Let's come to the third option first. Cut the bank rate and the repo rate. Now what is bank rate and what is repo rate? This is the rate at which RBI is lending to banks. All the commercial banks जो lending करती है RBI, percentage, what is the percentage of जिस पे वो लोन उनको प्रोवाइड करती है RBI. तो देखो बैंक रेट क्या है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, और रेपो क्या है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म लोन. ठीक है, दोनों ही केस में इफेक्ट सेम होने वाला है. नाउ थिंक अबाउट इट, अगर बैंक रेट और रेपो रेट रिड्यूस हो जाएगा तो होगा क्या, बैंक्स को आरबीआई को लेस परसेंटेज देना होगा ऑन द लोन दे हैव टेकन, और उससे क्या होगा, बैंक्स के पास अगेन ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा फॉर लेंडिंग पर्पस, बिकॉज बैंक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या है, लेंडिंग, राइट.
So अगर इससे होगा तो definitely this too is something which they will do. So the question would not do. Again, this is not the correct option. Come to the last one. Increase the MSF. This is marginal standing facility. अब हमें इसके लिए जानना है कि MSF क्या होता है. MSF आप समझो, ये एक पीनल रेट है. देखो, रेपो रेट और बैंक रेट जो है करंटली अपना रेपो रेट है 6.5% एंड योर बैंक रेट इज 6.75%. ठीक है. एमएसएफ क्या है आपका कि अगर ओवरनाइट लोन चाहिए बैंक्स को, ठीक है, तो एक पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ज्यादा रेट पे आरबीआई उसको लेंड करता है. मतलब ऐसी सिचुएशन है जो बैंक को ओवरनाइट क्राइसिस है फंड्स का, उसको इमीडिएटली बोरो करना है, देन दे वुड गो फॉर द एमएसएफ लेंडिंग. तो एमएसएफ लेंडिंग जो है, क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज द एमएसएफ. अगर एमएसएफ इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स बैंक को जो एक ऑलरेडी एमएसएफ एक पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओवर एंड अबव उसको आरबीआई को देना है. तो बैंक्स के पास जो फंड्स एट डिस्पोजल है वो रिड्यूस हो जाएंगे, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज द एमएसएफ. सो द करेक्ट आंसर इज B2. Okay, I hope all of you have got it. Now let's proceed to the next question. Now let's come to the second question for today. The money multiplier in an economy increases with which one of the following? पहले we have to know what is money multiplier. देखो, money multiplier is the process of credit creation. किस तरह इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन होता है. So what is the role of banks? What is the role of banks? Banks have to keep a certain percentage of funds as their reserve ratios. ठीक है. और उसके बाद जो बची हुई डिपॉजिट्स है उस पे they have to carry out their business, right? अब इस डिपॉजिट से how they can पैसे से आप कैसे पैसा बना सकते हो. This is the way how the money multiplies in an economy. The formula is 1 by R. Money multiplier का formula is 1 by R. That is 1 by reserve ratio. They are inversely proportional to each other. Okay. So keeping that, having said that, credit creation का जो process है, जिस तरीके से money create होता है इकोनॉमी में, उसी को हम समझते हैं money multiplier. Now have a look at the options. Increase in the CRR in the banks. Cash reserve ratio, जैसे अभी से पहले हमने SLR डिस्कस किया था, तो SLR क्या है, जो परसेंटेज ऑफ फंड्स बैंक खुद के प्रेमाइसेस में रखता है, ठीक है, विच इज सेट बाय द आरबीआई. ठीक है. अब कैश रिजर्व रेशियो है दैट परसेंटेज ऑफ फंड्स विच एवरी बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई. दिस हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई एंड नॉट इन देयर ओन प्रेमाइसेस, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ कैश विच इज द परसेंटेज ऑफ देयर एनडीटीएल, दैट इज योर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. ठीक है. सो सीआरआर विच इज करेंटली 4%. तो सीआरआर जो है अगर वो इंक्रीज हो जाएगा, अगर सीआरआर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स बैंक्स को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है. अगेन उसके पास जो मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज सीआरआर इज योर ब्लॉक्ड फंड्स. ठीक है. यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दैट. ठीक है. तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है, बैंक्स के पास कम पैसा अवेलेबल रहेगा फॉर लेंडिंग. ठीक है. तो मनी मल्टीप्लाई डेफिनेटली उससे इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज वी हैव सीन किस तरीके से बैंक्स क्रेडिट और क्रिएट कर सकता है, इससे तो रिड्यूस हो जाएगा. तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द एसएलआर. एसएलआर वी नो, जैसे कि सीआरआर कैश में है, एसएलआर आपका कैश है प्लस गोल्ड है प्लस आपका सिक्योरिटीज है. सो दीज आर लिक्विड वंस. ठीक है, हाईली लिक्विड वंस. तो इसका भी सेम ही इफेक्ट आने वाला है. अगर एसएलआर होगा, अगेन बैंक्स के पास कम पैसा रहेगा फॉर लेंडिंग. ठीक है, बिकॉज एसएलआर का परसेंटेज विच इज 18%. ठीक है, दे हैव टू बी केप्ट इन देयर ओन प्रीमाइसेस. दिस विल नॉट बी द ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल. ऑब्वियसली दिस इज द रियल रीजन कि मनी मल्टीप्लाई इकोनॉमी में इसी से होगा.
अगर लोगों के अंदर ये सेविंग की हैबिट होगी, दे विल गो एंड कीप देयर मनी इन बैंक्स, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वे क्रेडिट इज क्रिएटेड। इस तरीके से वही मनी जो आपका सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है एंड देन इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। आप देखो पॉपुलेशन डायरेक्टली नहीं है, देखो अगर पॉपुलेशन होगा ऑब्वियसली मोर एंड मोर पीपल वुड सेव, बट हाँ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, in India the central bank's function as the lender of last resort usually refers to which of the following? ठीक है, let's have a look at the option. Lending to the trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources. No, this is not. ठीक है, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली कोई इंडस्ट्रीज या बॉडीज को लेंड नहीं करता है, ठीक है, दे आर डूइंग इट टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहां से इंडस्ट्रीज एंड यू नो अदर लाइक जो भी यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग है जो भी है, दे कैन बोरो फ्रॉम देयर, ठीक है। तो डायरेक्टली इंडस्ट्री को दे आर नॉट लेंडिंग। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पोररी क्राइसिस, डेफिनेटली राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है, बिकॉज सी इट इज द बैंक ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इट हैज अ पाइवटल रोल टू प्ले, राइट। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बिकॉज कोई भी कंट्री का इकोनॉमी दो ही पिलर्स पे खड़ा है, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। सो यू मस्ट बी अवेयर कि सेंट्रल बैंक का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंट्रोलिंग द एंटायर बैंकिंग फंक्शंस, ठीक है, और डेफिनेटली प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स सो दैट व्हेनेवर दे आर इनटू क्राइसिस, जब फंड क्रंच है, ठीक है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, तो उसका ये फोरमोस्ट रोल है एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिगार्डेड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। कम टू द थर्ड ऑप्शन, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। देखो अगर लेंडिंग गवर्नमेंट को एज इन नाउ करेंगे तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज होगी, ठीक है। तो लेंडिंग टू द गवर्नमेंट एज डायरेक्टली इज नॉट यू नो समथिंग दे वुड बी डूइंग, राइट। So as a lender of last resort, definitely not the option. ठीक है, 1 and 3 आपका चला जाता है, the answer is 2 only. ठीक है, that is liquidity to the banks having a temporary crisis. Okay, now let's proceed. Question number 4. Which of the following is not, again, not involved है, is not the most likely measure of the government और RBI which takes to stop the slide of Indian rupee. अभी इंडियन रूपी का स्लाइडिंग काफी न्यूज में है, ठीक है, बट दिस वाज अ PYQ, ठीक है, पहले आ चुका है। तो लेट्स हैव अ लुक कि कौन सा नहीं करेंगे, विच ऑफ द थिंग्स RBI और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अगेन, टू स्लाइड द जो डेप्रिसिएशन हो रहा है रूपी का। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस वन बाय वन। Curbing imports of non-essential goods and promoting exports, ठीक है। Obviously, RBI can directly intervene in the forex market, ठीक है, to do what? जो volatility जिसको हम कहते हैं रूपी का, वो रिड्यूस करने के लिए एंड रूपी स्टेबिलिटी इंश्योर होगा, ठीक है। सो दे कैन डेफिनेटली डू दिस टू यू नो लाइक टू स्टॉप द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, नॉन इसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट्स को रिड्यूस करके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है। सेकंड ऑप्शन, encouraging Indian borrowers to issue rupee डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। देखो बॉन्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस आर कमिंग एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मसाला बॉन्ड्स। तो पहले अपने को जानना है व्हाट आर मसाला बॉन्ड्स और अदर रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। देखो these bonds, masala bonds, are issued by Indian companies
issued by Indian companies where in foreign countries. ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स है ये इंडियन कंपनीज इशू करेगी फॉरेन कंट्रीज में एंड दे आर डिनोमिनेटेड इन रूपी. ठीक है, मतलब ये रूपी में डिनोमिनेटेड है. ठीक है, और इंडियन कंपनीज इशू कर रही है फॉरेन कंट्रीज में. सो नाउ वी सी इससे होगा क्या अगर हम और बॉर्डर्स को इनकरेज करेंगे टू इशू दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स. तो उससे क्या होगा, रूपी स्ट्रेंथन होगा. ठीक है, और डॉलर की डिमांड रिड्यूस होगी. सो डेफिनेटली 2 is the correct option. Now let's have a look at the third. Easing conditions relating to ECBs, which is your external commercial borrowings. अब ECB क्या है? First you have to know that what is ECB. देखो ECB का मतलब है these are issued by foreign entities where in India. They are issued by foreign entities in India for what? For financing commercial activities, right? Commercial activities के लिए they are issued by foreign entities, right? So इसका main purpose क्या है? Why they have been doing that? Especially investments are being made in PSUs, राइट? इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. और इसको करने से होता क्या है, हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, सो अगर हम इसकी कंडीशंस को थोड़ा सा ईज करेंगे, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे डेफिनेटली वी कैन stop the slide of Indian rupee, right? So this too is a correct option. Following, let's have a look at the last option. Following an expansionary monetary policy. देखो expansionary monetary policy हमें पता है what it is. You are pumping more money into the market. इससे होगा क्या, अगर आप ये करोगे रूपी स्लाइडिंग को रोकने के लिए, तो इससे ऑपोजिट इम्पैक्ट होने वाला है. इससे क्या होगा, रूपी वीकेन होगा. Again, which we don't want to do that. हमको रूपी को स्ट्रेंथन करना है. ठीक है, so this is the wrong option, right? So which should it not be doing? D is the correct answer. Following an expansionary monetary policy. Now the last question for in this segment, fifth question. This is a very easy one. Which of the following statements are correct? Now this is correct. यहाँ पे not to do वाला कुछ नहीं है. Are correct regarding the Monetary Policy Committee, MPC. See, MPC was formed in 2016. Why? Because there was issues with the government of India in terms of fixing of the benchmark interest rates, right? So to do away with that, we have a transparent body like MPC, जिसमें there are 6 members. ठीक है, 3 members are from RBI and 3 members are from the GOI. ठीक है, so ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे decisions लेते हैं, which was earlier done only by the RBI. Okay, so MPC का main role ये था. So let's have a look at the options now. It decides the RBI's benchmark interest rate. Yes, this is the correct option. Let's have a look at the second option. It is a 12-member body. It's not a 12-member body, it's a 6-member body, including the governor of RBI, and is reconstituted every year. This is a wrong option. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Okay, this might look correct, but this is not correct. The RBI chairman is the one who is heading this body. He is the ex-officio chairman. Okay, so the RBI के जो governor है, he is the ex-officio chairman. So he is the one who will be heading this.
and not this. So this 2 is a wrong option. So the correct answer is 1 only. Okay, so have a look at this and try and check yourself how many of you are getting questions correct and why you are getting it wrong. Evaluate yourself till the next time we meet. Thank you guys.